बचते थे, अभी तो 700 से ज्यादा हो गए। 600 में से सिर्फ 80 तक पहुंचे, 8 से लेकर 14 तक, 2008 से 14 तक। सो लॉन्च करने में खुशी है, मगर इंप्लीमेंट करने में नहीं। मगर हमारे नीयत अलग है, इंप्लीमेंटेशन के ओर है। लोग वेट करते रहे और वेट करते रह गए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा जन औषधि केंद्र और हम सस्ते दवाएं खरीद पाएंगे, मगर इंप्लीमेंट करने में नहीं। मगर हमारे high prices of drugs are affecting normal, middle class and poor family. As a result, he took direct interest in it and made sure Jan Aushadhi Kendra are implemented and opened in every district. If you see the progress between 2014, every year the numbers increased. In 1 year, the number of stores tripled from 80 to 279, 15-16. And then it became 1,080 in 16-17. The target of opening 3,000 kendras was achieved in December 2017. Sir, now साल में अभी 9,484 जन औषधि केंद्र देश भर में है. And these Jan Aushadhi Kendras have nearly 50 to 80% cheaper medicine, which benefits the middle class, which benefits the poor, and nearly 1,800 drugs are available there. 285 surgical equipments are also available सस्ते में. इसीलिए हम ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्चिंग में मजा नहीं है, एक्चुअली एग्जीक्यूट करके दिखाओ, उसमें जनता का हित है. सर, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस 700 से लेकर 1,341 हो गया है अभी. 2014 में 700 ही थे, आज 1,341 मेडिकल कॉलेजेस. मेडिकल सीट्स जिससे आपको डॉक्टर्स जरूरत है देश में, उस समय 2014 में 82,466 सीट था. आज 1,52,129 सीट्स अवेलेबल है. सर, 69,000 सीट्स नया ऐड हुआ है. सर, एम्स के बारे में बहुत चर्चा होती है इस सदन में. 2014 में 15 एम्स थे, आज 23 एम्स है इस देश में. और मैं और एक विषय बोलना चाहिए इस विषय में. सॉरी, यस सर, मैं 14 में एम्स 7 थे सर, मैं गलत 15 बोल दिया. सर, एम्स के बारे में, सर एम्स के बारे में senior member Thiru T.R. Balu had expressed his concern about AIIMS in Madurai. Sir, I want to say some particular details on that. It was very disappointing, sir, that such a senior member had to say, is it not something of this wording, I'm saying it in English, is it not shameful on the part of the PM that he has to borrow from Japan, JICA, to build our AIIMS? So I just... Tamil mein, sir? He spoke in English, sir. I'll say, speak in English. No, don't worry. Sir, my reply will be both in English and Tamil, sir. Both. I am not quoting in English or Tamil, whichever honorable member said. It is recorded and everybody is heard. But my reply, thank you to you, sir, because you've given me the permission, will be both in English and Tamil. Sir, thank you. Sir, AIIMS, first I'll say it in English, sir. AIIMS in Tamil Nadu, Madurai. Sorry. Hanji. Sir, AIIMS in Tamil Nadu, sir, is being set up in Madurai. The total project cost is
1,977.80 crores. And the loan amount is 1,627 crores. Sir, I want to be clear and I want this to go on record. Since this is a central sector project, the center has taken the entire loan and there is no burden on Tamil Nadu government. It forms a part of a central borrowing. GOI, Government of India, has similarly funded through JICA loans, high-speed train of Mumbai-Ahmedabad bullet train project, which also comes under central sector. So the servicing entirely of that loan is done by Government of India. Now, in other states you have established aims, but in Tamil Nadu you have not yet established. I want to say treatment is no different. If anything, aims in Tamil Nadu receives one additional benefit. I'd like to put that on record. Normally, aims usually has 750 beds, whereas aims Madurai will have 900 beds, 750 plus 150 beds, because infectious block is also being added. Infectious disease block is not also getting added. Sir, MBBS classes with 50 students has already started from April 2022. April 2022 in a temporary accommodation, and that medical college in temporary accommodation is in Ramanathapuram. Currently, sir, 1 minute, sir. If you will allow me, I will continue and they can always have their objections said to what I'm saying later, sir. Medical College Ramanathapuram currently has 99 students who have been admitted. Sir, Madurai it is coming. AIMS is coming in Madurai. Sir, now that, sir, will you permit me to say it in Tamil? Sir, AIMS Madurai, Maduraile kattapadrathu. Maduraile 1977 கோடிக்கான இந்த எய்ம்ஸ் 1627 கோடிக்கான கடன் ஜைகாலேந்து எடுத்துக்கிட்டு மத்திய அரசு கட்டுது. மத்திய அரசின் செலவுல கட்டப்படுது. மத்திய அரசு இந்த லோனை தீர்த்து வைக்கும். தமிழ்நாடு அரசுக்கு இதன் மூலமாக ஒரு விதமான கடன் உபாதையும் இல்லை. இந்த லோன் மத்திய அரசோட லோன், இது தமிழ்நாட்டுக்கு மேல இல்ல. அதனால தயவு பண்ணி இந்த ஹவுஸ்ல இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது தப்பு அபிப்பிராயம் கலப்ப வேண்டாம். அதை தவிர இல்ல, எல்லா ஊர்லயும் கட்டப்படுற எய்ம்ஸ் 750 பெட் தான் இருக்கும். ஆனா தமிழ்நாட்டுல மதுரையில கட்டப்படுற எய்ம்ஸ்ல 950 பெட்டுகள் இருக்கப்படுறது. 700க்கு மேல 150. அந்த 150 கூட தொட்டு வியாதி வராம இருக்கிறதுக்கான தடுப்பு வார்டு கட்டுறதுனால, அதனால தமிழ்நாட்டுக்கு கடனும் இல்லை, நிறைய பெட்டும் கிடைக்குது. So health விஷயத்துல I've said that this is very clearly established. There is no need for Tamil Nadu to worry whether we are borrowing or whether we are building out of our own funds. It's part of our fiscal management, and JICA is one of the external commercial borrowing, and therefore it doesn't undermine the importance of aims that is getting built in Madurai. Sir, sir, இப்ப வரைக்கும் கடன்ல வாங்குற வெக்கமா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. இப்போ கட்டுறோம் சொன்ன பிறகு எப்போ போய் சொல்ல வேண்டாம் சார் இந்த அவையில. சார், கோவிட் சமயத்துல டைரக்ட் டிரான்ஸ்பர் பெண்களுக்கு செய்யும் கரீப் கல்யாண் யோஜனா provided 80 crore poor people, vulnerable citizens food. Sir, in this, Professor Saugata Rao asked about poverty, and one of our honorable members stood up to say about poverty.
I want to read the IMF working paper, April 22, which says, subsequently, मंत्री जी एक मिनट प्लीज एक मिनट। सदन ने ये तय किया था कि नारेबाजी नहीं होगी, तय किया था ना। और मेरा मानना, बीजेपी वाले और कोई भी दल वाले नारेबाजी करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कह दिया उसके बाद कोई नारेबाजी करेगी तो व्यवस्था मेरी है। आप फिर क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? जब व्यवस्था देख दो, व्यवस्था से सदन चले। माननीय वित्त मंत्री जी, these are hard facts that I've given on the data, sir. next. Sir, poverty alleviation, somebody was raising that question, and one of our honorable members stood up to say, but I want to read this. IMF working paper, sir, of April 2022. I'm quoting it. Subsequently, the doubling of entitlements in 2020, जहां भारत सरकार ने रेशन डबल किया और टोटली मुफ्त में दिया, उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली सर मोर तमिलनाडु विषय है सर। नहीं, वो सुनकर जाए सर। बहुत सारे और तमिलनाडु का फैक्ट्स है, सुनना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं? ये वार्निंग है। தமிழ்நாட்டை பத்தி உன்ன நிறைய விஷயம் நான் சொல்லணும், ஓடிராதீங்க। ஒருவேளை போனா கூட போய் டிவில பாருங்க, தமிழ்நாடு விஷயம் இன்னும் நிறைய சொல்றதுக்கு இருக்கு। நான் சொல்றேன், அதை டிவில போய் பாருங்க சார்। Sir, more matter on the aims of Madurai, sir. Budget was increased from 1,200 to 1,900 crores. Land acquisition लेट किया तमिलनाडु में, इसलिए तो वो लेट हो गए, भाग गए। सुनने में डर हो रही है उनको सच्चाई। लैंड एक्विजिशन लेट பண்ணதுனால 1200 கோடியில இருந்து 1900 கோடி வரைக்கும் போன அந்த பட்ஜெட் இன்னும் நடக்காம இருக்குன்னா அதுக்கு படி அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமே தவிர மத்திய அரசு மேல இல்ல। அதே சமயம் கோவிட் சமயம்ல விசிட் பண்ண முடியாம போச்சு। Because of COVID, the site inspections could not happen. And as a result, they could not speed up the work. I can understand the difficulty of the state government. But no, I don't want to hear. Unfortunately, there's more to say, more facts to say on Tamil Nadu, and I'm sure honorable members will see it on the television. But I will say it nevertheless. Sir, I want to highlight that IMF working paper, sir, which was issued in April 2022. Subsequently, I'm quoting, the doubling of entitlements in 2020, doubling meaning Prime Minister Modi, where ration was only 5 kg per person, gave another 5 kg and gave totally free for 80 crore people. So referring to that, subsequently the doubling of entitlements in 2020 helped maintain extreme poverty at the low of 0.8% level. Without any food subsidies, extreme poverty in the pandemic year would have increased by 1.05%, and lower middle income poverty would have increased by 8%. This is IMF recognizing Prime Minister Modi's Garib Kalyan Anna Yojana and saying that stopped people from going into poverty. Sir, lots of steps have been taken for containing inflation. I want to highlight some of them specifically because people are requiring of that kind of a steps because we want to contain inflation. So I want to recognize the group of ministers which has been taking timely steps to contain the high prices which are hitting common citizens. So Tur import in the current year is higher than that of the Kharif season, that of the corresponding year last year. Shipments from Mozambique are on the way. In the case of urad dal, sir, current Kharif sowing is 14% lesser than before, and for this 3.3 lakh metric tons of urad is expected to be imported from Myanmar, and therefore that will also cool the prices down.
sufficient stocks of domestic moong is available, and therefore aggressive disposal measures are also being taken. In respect of masoor, sir, domestic and global availability positions are comfortable. The procurement of imported masoor stock has also been initiated, and that will also add to the buffer. There is also a conversion of chana into chana dal, so that for retail disposal under the Bharat Dal initiative, which has been launched on 17th July 2023. Another 3 lakh metric tons of onions for the buffer has also been in procurement completed. I also want to add, sir, procuring of tomatoes from tomato growing regions of Maharashtra and Andhra Pradesh and also Karnataka, and distribution of these through cooperative societies like NCCF, NAFED are all happening. Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi and Rajasthan, this has already started from 14th July, and this will continue. Also in Delhi, mobile vans are distributing as outlets of NCCF and NAFED, and also the Kendriya Bandar. As on date, sir, NCCF has distributed 8,84,612 kgs of tomatoes in Rajasthan, Delhi, NCR and Uttar Pradesh, and this will continue in the coming days, and this will be increased also. Also, through the ONDC, the Open Network for Digital Commerce, Delhi NCR region citizens can procure tomatoes. Already prices in Andhra Pradesh and Karnataka, the wholesale mandis of tomato has started coming down below 100%, 100 rupees, and we expect this to also help us. As of today, sir, we have booked tomatoes from Kolar Mandi and coming to Delhi, and this will be coming at 85 rupees per kg. Also, the wholesale price in Andhra Pradesh, as I said, has already started coming below 100. We have also initiated imports from Nepal by removing the import restrictions, and the first lot of tomatoes from Nepal are likely to reach Varanasi, Lucknow, Kanpur by Friday itself. NCCF is planning a mega sale of tomatoes in Delhi NCR region at a subsidized rate of 70 rupees this weekend, and covering all the nooks and corners of Delhi. So I want to highlight the fact that on these essential commodities, we are taking enough steps, but more will also be taken, because we are conscious that people need essentials at an affordable price. So COVID management also tells a lot about how we were able to, sorry? Minister has already placed all these statistics. So it's again a repetition. So you don't want data? So just to highlight what measures have been taken to make sure the recovery happens well. Manufacturing, we brought in PLI schemes and ease of doing business reforms. Taxation, we brought in faceless income tax, repealed retrospective taxation, we brought in transparency. ECGLS has benefited 14 lakh MSMEs. One Nation, One Ration card has benefited the common man, particularly the migrant workers. Credit for street vendors is now available under PM Swanidhi without any kind of collateral. Diversified opportunities in coal has resulted in several minerals being now freely available. Account aggregator has come in play, and also limited liability partnership have been provided, a lot of ease of doing business. So I will move over to talking about, sir, inflation. Of course, if I give data, it's not comfortable for many of them to hear, but it is a matter of fact, sir, that opposition-ruled states have not reduced the price of fuel, as a result of which inflation in those states are still continuing to be high. Rajasthan is one of them. Bihar, Kerala, Telangana are all still keeping their fuel price high. Punjab, in fact, has gone to increasing the price of fuel. As a result,
inflation pressures are being felt, although Prime Minister Modi twice reduced the price by cutting down on excise duty. Sir, MSME, I had a few things to say, but for the constraint of time, I'll move over to talking on how Modi ji has kept the whole nation in mind. North, East, West, South, all of them have been given several important projects. Sabka Saath works out, sir. East, for instance, 5 fertilizer factories have been saved from closure, 4 of them in eastern India, Gorakhpur, Barauni, Talcher and Sindri. Northeast, actually, a special program called PM Divine was given, as a result of which 6,600 crore fund reached the Northeast for livelihood development, social development and infrastructure development. Capital expenditure has also been given as grants to many of the states. So Northern India, in fact, particularly Jammu and Kashmir, benefited after Article 370 has been removed. An immense lot of progress is being made in J&K. I want to focus also, sir, on the central India, where commencement of commercial coal mining has actually helped the states. Now, production of wheat in Madhya Pradesh has increased from 174.8 lakh tons to 352.7 lakh tons in the last decade. Madhya Pradesh's share in wheat export is now 46%. And also, if you look at it, paddy also is now being produced on a higher number. 53.2 lakh tons is now 131.8 lakh tons. So, actually, G20 is a forum where Prime Minister Modi has showcased all India. The meetings are happening in every state of India and not confined to any one particular. So, Sabka Saath is now showcased in so many different ways. I want to emphasize, because I'm from the South, I just want to highlight that Prime Minister Modi recently announced redevelopment of railway stations. 508 railway stations are being redeveloped, of which 76 are in South India. Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana. And 2,286 crores are being used for the redevelopment of 76. And again, sir, 6 Vande Bharat Expresses are running in all the southern states, 5 of them. So 6 Vande Bharat in 5 states are being now deployed. Mega integrated textile region and apparel parks Mitra are being set up all over the country. 3 out of the 7 which are being set up all over the country are being set up in South India. In the union budget, sir, the budget for Mitra has been increased from 3 crores to 200 crores. Now, the 3 Mitra parks are in Tamil Nadu, Telangana and Karnataka. So, Jal Jeevan Mission, I've already explained, I wouldn't go into the details. Each one of the states has received schemes, whether it is Awas Yojana, Swachhata, I can go into the details, but I just want to highlight tax devolution, an important fact, sir. 2004 to 14, 3.56 lakh crores were devolved to the states, whereas up to between 2014 and 2023, with 1 more year to go, we have already devolved 10.69 lakh crores. Where is 3? Where is 10.69? So I want to highlight that. Similarly, grants given to states, sir, I just want to highlight that between 2014, 2.18 lakh crores were given as grants to states, whereas now, till 2023 March, 9.38 lakh crores have been given as grants to the states. Sir, you are aware that we gave special assistance to states on capital expenditure, which is a 50-year loan, interest-free, being given to all the states. From 2020-21, the COVID year to today, we have given 25,000 crores, 25,245 crores to 5 states in the south as interest-free capital assistance, special assistance on capital. So, sir,
I now just go to those specific members who have raised issues. Honourable Member Supriya Sule is seated here. She raised a question about doubling of farmers' income. I want to highlight, sir, many steps have been taken to reduce input cost of the farmers, which leaves more money in the hands of the farmers themselves and therefore increasing their net income. I'll just specifically flag up those specific benefits which will result to the farmer. Domestic urea prices did not increase in spite of the international prices going 10 times higher. Approximately 300 a bori is continuing to be 300 a bori, although international import prices were touching 2,980 crores, 2,090 rupees also. So, where is 2,900 and where we have retained the 300 per bori without any change? The central government, because Prime Minister Modi was clear, you will not burden the farmers, so we have not increased the price. Nano urea is now being produced in India itself, developed in India itself, which will reduce the need for the total quantity of urea by farmers because this is far more efficient. Fasal Bima Yojana, sir, 1.33 lakh crores have been settled as claims for the farmers. So that has also come of help. Minimum support price, yesterday Honourable Home Minister explained about it, so I won't go into the details. E-NAM has also now played vital difference in the one nation, one market. Many of the farmers are now finding better prices through E-NAM. PM Kisan, sir, was launched. It provides 6,000 rupees a year, supports 8.5 crore farmers, and more than 2.5 lakh crores have been devolved or transferred since its launch in 2019. Sir, Swamitwa scheme, record of rights, 1.36 crore records of rights have been given in 3.56 villages have been notified. Sir, with all this, I'm sure the farmers' income and the money in their hands will increase. Sir, yeah, that has been answered even in the budget session, sir. Sir, there was one question raised again by Honourable Member from Tamil Nadu, not here unfortunately, but I will take the opportunity to answer it. You have installed the Sengol in the new parliament with great fanfare. Sengol. But do you really know the history of Tamil Nadu? Have you heard of the Pandyan Sengol? And also, do you know the story of Kannagi? Please read Silapadigaram. Don't impose Hindi. All this was said, sir. I just want to highlight the fact that Sengol, particularly as given to our first Prime Minister, was also given by the Adimans, who are a unique institution for Tamil Nadu. Now, the same party has no objection when that sacred Sengol has been treated as a walking stick for Prime Minister Nehru. It was kept in a private house and it was used as a chadi, not Sengol. Private house is a public museum, man. You know that. No, it can be, but it was also titled Kai Tadi, walking stick. You should be fair, Sashi Tharoor. It was lost in history. It is. I was going to talk about it. I will talk about it. I'm glad you raised it. It was forgotten in history. It was forgotten and kept in some kind of a museum which says it's a walking stick. That doesn't hurt the Tamil pride, sir. Is that not an insult to the Tamils? So, when Honourable Prime Minister restored it to its rightful place in Lok Sabha, it becomes an issue. That's an insult to the Tamils. Would you not want to raise about it? Sir, it was ignored for decades. Now, Tamil Nadu, Kashi Tamil Sangamam actually showed how Tamil Nadu and Kashi have very, very deep connections. Tamil New Year's Day
was celebrated by Honorable Prime Minister. I don't know if Dr. Murugan is here. He went to his house and celebrated Tamil New Year's Day. And the first time you've heard Tamil being quoted in UN, and in his Mann Ki Baat, so many times he is referred to Tamil. And also, more than 10 to 12 quotes have been taken from Purananuru or Thirukural and been used. Whereas, sir, because Shashi Tharoor is so keen on putting history right on records, I want to say, he's a Malayali, but I'm glad he's also concerned about Tamil Nadu. But I would want him to please recognize the fact that it was during the UPA government, when DMK was a partner in that government, that Jallikattu, which is a very typical Tamil culture, reflective of Tamil culture, was called a Kattumirandi, barbaric game, and was banned by that very same UPA, in which the same party DMK was a member. Is it barbaric, sir? It took Prime Minister Narendra Modi to come back and permit in 2016 to have Jallikattu played in Tamil Nadu. So, the very same party which is now shedding crocodile tears should know about it. Sir, they first banned it through the Animal Welfare Board Act, and then it went to the court. And we gave a suggestion to the local government saying, don't please, you have powers to extricate it out. And when it is possible by Prime Minister Modi, why couldn't they take it? First of all, who put it as a barbaric game? Oh, Kodikunil Suresh, don't try to score a point. Who put it as a barbaric game? You. So, sir. Sir, Honorable Member Kanimudi also said, stop imposing Hindi on us. Please read Silapadigaram. That will give you very many lessons to you all. I want to say, sir, in Tamil Nadu, for over several decades, pala natkalaga Tamil Nadu, pala varshangalaga Tamil Nadu, Hindi thinipai edirkrom endra peril, ஹிந்தியும் சம்ஸ்கிருதமும் கத்துக்க கூடாது அது ஒரு திணிப்பு இருந்தது. நாங்க யாரும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ கத்துக்க முடியாத அளவுக்கு திணிப்பு இருந்தது, கொள்கை மூலமான திணிப்பு. உங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கக்கூடுமோ தமிழை வளர்க்கறதுக்கு, அந்த அளவுக்கு இன்னொருத்தர தமிழோ சம்ஸ்கிருதமோ ஹிந்தியோ படிக்க கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் உங்ககிட்ட இல்ல. இருந்தாலும் நீங்க ஹிந்தியை வளர்க்க கூடாது, தமிழை தான் வளர்க்கணும்ன்ற அந்த ஆணவத்துடன் எங்க யாரையும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ படிக்க விடல. இது நான் I'm telling my lived experience. It is that Tamil Nadu which stops every individual from learning Hindi or Sanskrit. Today, in the name of language, they are coming and telling us, read Silapadigaram. I want to tell them about Silapadigaram. Sir, there was someone very eminent by name Maposi, Mailai Ponnuswamy Sivajnanam. He was given the title Silambu Chelvar. In 1951, he was an authority on Silapadigaram. He was an authority. And an honorable member tells us, you read Silapadigaram, you will get to know a lot. I would want to read Silambu Chelvar Maposi's words, which he wrote in 1951 in Tamil Murasu. I'm quoting, sir. Silapadigaram. Sir, Silapadigaram, Nam Dravidar Allar, Tamilar. Silapadigaram, Nam Dravidar Allar, Tamilar. Namadu Thayagatin Pair, Dravidam Andru, Tamilagam. அதன் வடக்கெல்லை விந்தியமன்று வேங்கடம். தமிழ்நாட்டு அந்தனர் ஆரியர் அல்லர் தமிழர் என்கிறது. மற்றும் தமிழருடைய பண்பாடும் பழக்க வழக்கங்களும் பெரும்பாலும் வேங்கடத்திற்கு வெளியே உள்ளவர்களின் பண்பாடுகளுக்கும் பழக்க வழக்கங்களுக்கும் வேறானவை ஆயினும் விரோதமானவை அல்ல என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. Unquote. Sir, I'll just give you a summary.
Silappadigaram tells us that we are Tamils, not Dravidars. Namadu Thayagatin Pair, that is. Sir, Honorable Member should have asked that question to Honorable Member Kanimozhi, saying, why are you talking about Silappadigaram? This is not vote of confidence. But now that it is raised, it's my duty to answer. Because she tells us, you should read Silappadigaram. I want to tell how Prime Minister Modi implements Silappadigaram's principles. Sir, Ek Bharat Shreshta Bharat. Ore Bharadam, Unnada Bharadam. Adan Mulamaga, சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது மாபோசி அவர்கள் சொன்ன அதே விளக்கத்தை தான் பிரதமர் மோடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு. தமிழ்நாட்டில் அது எல்லாருக்கும் புரியும். ஆனா நாங்க அரசியல் பண்ண விரும்புறோம், உண்மையை சொல்ல விரும்பல. அதனால சிலப்பதிகாரத்தில் உன்ன ஸ்பிரிட் திராவிடர் அல்லர் தமிழர். We are Tamils, we are not Dravidians. We are our motherland is Tamilagam, not Dravidam. அதே சமயத்தில் நம்மளோட வடக்கெல்ல that northern border is Vengadam and not Vindhya. And again he says beyond Vengadam, if people's cultural habits and practices, daily lives are in one form, they may be slightly different, but they are not very opposite to us. So it talks about countries' oneness, India's oneness, whereas a separatist language, I'm not saying she is speaking it, but a separatist language influences the kind of language with which Honorable Member tells Prime Minister, read Silappadigaram. Sir, lastly, I know you've been very indulgent with the time. Lastly, sir, Honorable Member Kanimozhi spoke about Draupadi in Mahabharata. I was very touched. Draupadi in Mahabharata, she actually claimed, and I agree, was humiliated. She was stripped. Draupadi. Sir, about women, about stripping, about demeaning women and shaming women, all of us will have to feel really very seriously. And I'm sure she has that concern. I don't undermine that. Shame. I agree. She's got the concern. But I want to highlight one thing, sir. Women suffering anywhere, Manipur, Delhi, Rajasthan, anywhere, we'll have to be taking it seriously. No politics played on it. But, Madhya Pradesh. But I want to just remind Honorable Member Kanimozhi and remind this entire House of one incident, sir. Of one incident which happened on 25th March 1989 in the Tamil Nadu Assembly. Again, a sabha, a very sacred sabha. And what was it? Then she hadn't become chief minister, leader of the opposition, first woman. That first woman. Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. In the assembly, she was the leader of opposition. Her sari was pulled. And the DMK members who were seated there heckled at her, laughed at her, made fun of her. You're talking of Kaurava Sabha? You're talking of Draupadi? Has DMK forgotten Jayalalitha? You pulled her sari. You demeaned her. Sir, that day, Jayalalitha took a oath that she will never come to the house unless she becomes chief minister. And 2 years later, believe, all of us know it, she returned as chief minister of Tamil Nadu. That party, which was in power at that time, sitting in the assembly, leader of the opposition, sari being pulled, today talks about Draupadi? Unbelievable. 25 March மாசம் 1989 அப்ப லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் எதிர்க்கட்சிக்கு தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதாவோட புடவையை பிடிச்சி இழுத்த கட்சி, ஜெயலலிதாவின் புடவையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு அவமானப்படுத்திட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு, Supriya ji, don't stop me, you are a woman, how dare we talk about this? And Jayalalitha
walked out of the house and said she will not come. அந்த சபையை விட்டு ஜெயலலிதா ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வெளியில போனாங்க. நான் திரும்பி வரமாட்டேன், வந்தா சீஃப் மினிஸ்டரா வருவேன்னு. அந்த கட்சி டிஎம்கே இன்னைக்கு திரௌபதியை கோட் பண்றாங்களா? என்ன அநியாயம் இது! அதுல இன்னும் விவரமா திரௌபதி அப்ப கடவுள் சொன்னாரு, கடவுள் வந்து உதவல, சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரா இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்ப சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் யாருங்க? தமிழ்நாட்டு எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? டிஎம்கே சேர்ந்த எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காதா? அதனால சார், thank you very much for having given me this opportunity, and I hope vote of confidence will be squarely defeated. श्रीमती राजश्री मलिक. सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विजु जनता दल पक्षरु मते आज अनास्था प्रस्ताव पर वक्तव्य रखिबार सुजोग देइथिबारु मु आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद देउछि सर। सर्वप्रथम मु कहि रखे ए प्रस्ताव को मु ए अनास्था प्रस्ताव को मु ग्रहण करि पारु नहीं एवं विरोध करूछि। सर, ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अक्लांत परिश्रम तथा ओडिशावासी स्नेह श्रद्धा एवं विश्वास जोगु आज ओडिशा अन्य बड़ बड़ राज्यों को पछरे पकाई एक विकासशील राज्य मान्यता पाई। Please let the house be in order, please. Please, honorable ministers, please let the house be in order, please. Welcome. Yes, ma'am. सर, ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अक्लांत परिश्रम तथा ओडिशावासी स्नेह श्रद्धा एवं विश्वास आज ओडिशा अन्य बड़ बड़ राज्यों को पछरे पकाई एक विकासशील राज्यर मान्यता पाई एवं विश्व स्तर में निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि। स्वच्छ एवं गतिशील शासन द्वारा ओडिशा अर्थनैतिक क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन मध्य करि पारिछि। ओडिशार आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अन्य राज्य तुलन में कमिबारे लागिछि। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नुहे सर, बरं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जोगु आज ओडिशा एक सोशल स्टेबिलिटी संभव हो पारिछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सर्वदा ओडिशार विकास को गुरुत्व दे आसिछंती। कथा कम काम बेसी रे विश्वास रखुवा नवीन बाबू सर्वदा अन्य राजनैतिक दल सह सर समदरतार कथा मध्य कहि आसिछंती। एही संघीय व्यवस्था रे राज्य एवं केंद्र सरकार का मध्य रे उत्तम समन्वय तथा कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रे विजु जनता दल सर्वदा प्राधान्य दे आसिछि। सर, संसद रे जनसाधारण विभिन्न समस्या आलोचना करिबा पई विजु जनता दल समस्त सांसद प्रतिश्रुतिबद्ध एवं यह संभव हो जेतेबेले केंद्र तथा राज्य मध्य उत्तम समन्वय सह राजनीतिक स्थिरता रहिबो। सर, विजु जनता दल बुझी केवल डेवलपमेंट काम विकास हुए नहीं, बरं विकास सेतेबेले हबो जेतेबेले प्रत्येक ओडिशावासी सशक्त और सुदृढ़ हेबे। सर, आमे जानिछे जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। एही कथा को सत्य रे परिणत करिबा पई नवीन बाबू आज ओडिशा रे महिला मानकर पई एपरि एक परिचय सृष्टि करि पारिछंती। सर, मु कहि रखिबाकू चाहे ओडिशा रे मिशन शक्ति द्वारा आज 80 लाख ऊर्ध्व महिला आज एसएचजी महिला स्वावलंबी हो पारिछंती। आज माटीए केवल घर भितर सीमित हो रही नहीं, आज तार यात्रा एसएचजी रु एसएमई पर्यंत घर चारिकांथरु बाहरी देश बाहर को जाई पारुछि एवं शिल्पोद्योगी भाव में एक निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि। केवल अर्थनैतिक स्तर में नुहे, माटी आज राजनीतिक स्तर में निजर प्राधान्य विस्तार करि पारिछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विजन 50% रिजर्वेशन महिला मानक पई पंचायत स्तर में आज 55% महिला सर पंचायत स्तर में आज जीतिकी आसिछंती एवं 30 जिल्ला रे सर जिला परिषदर अध्यक्ष मध्यरु 21 जन महिला अध्यक्ष हो पारिछंती। सर, केवल एतिकी नुहे सर, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करबा पई माननीय मुख्यमंत्री एवं विजु जनता दल सबबेले दाबी करि आसिछंती। 2018 रे माननीय मुख्यमंत्री को चिठी लिखि रिक्वेस्ट करथिले एवं अन्य 22 राजनीतिक दल को मध्य अप्रोच करथिले। 2019 रे ओडिशा रे प्रथम राज्य थिला सर जे 33% रिजर्वेशन
अनुसार लोकसभा महिला मानक प्रार्थी करथिला एवं आज आम सर 5 जन महिला आज संसद को आसी परिछु सर। सर आज मु मध्य पुणी थारे आदरणीय प्रधानमंत्री को वुमेन रिजर्वेशन बिल उपरे उचित पदक्षेप नेबे बोली मोर आशा रखिबी एवं दाबी मध्य रखिबी सर। Yes. ओडिशा है Yes, please. सर 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 जे कोनोसी अन्य राज्य सबुठारे महिला मानकर सम्मान अपरिहार्य ता नहले ए देश ए जाति ए समाज आगो को बढ़ी परिबो नाही। एभली एक संवेदनशील मन आज जदि मणिपुर घटना रे आज 140 कोटी देशवासी मुंड आज तलको नहीं जाइछि नारी को सम्मान समस्त देशवासी गुरुदायित्व रही सम्मान देबा। सर केवल महिला कहीं ओडिशा रे प्राय 39% हेउचंदी सर अनुसूचित जाति और जनजाति विजु जनता दलंकर सांसद माने उभय गृह रे सब बेले दाबी करि आसीचंती हो मुंडारी भूमि जब संविधान रो 8 शेड्यूल रे स्थान दिया जाऊ। सर आई विल conclude sir 2 minutes 2 minutes within 2 minutes sir please 2 minutes last sentence concluding sentence please सर जनजाति मानकर भाषा संस्कृति परंपरा पई ऐतिह्यर विकास पई संरक्षण पई ओडिशा सरकार 23 टी जिल्ला रे सर उन्नयन परिषद मध्ये गठन करिसंती। yes ma'am तेनु सर आज कहि रखेबा को चाहे सर please have the concluding sentence please सर एई फेडरल स्ट्रक्चर रे बा संघीय व्यवस्था रे राज्य सरकार रा विकास केंद्र सरकार का सहयोग बिना संभव नुहे सर। तेणु रेलवे हो एनएच हो पोर्ट्स हो बैंकिंग हो डिजिटल कनेक्टिविटी हो जेकोसी स्कीम हो सर राज्य सरकार केंद्र सरकार सहयोग रे संभव होई। थैंक यू केंद्र सरकार अर्थनैतिक और राजनैतिक स्थिरता पर देश सर विकास रो संभव होई था सर। थैंक यू वेरी मच मैम what is your what under what rule 376 is the rule please 376 no I am asking under what rule you are making the point of order 376 is the rule by which sir wait 376 is the rule the misleading the house no please Sri Azauddin Owaisi no you point out the rule by which under why by no 376 is different 376 is a rule by which you can raise a point of order. Under what rule you are making a point of order? That is my question. Yes, Azauddin Owaisi, please. That you do, give it in writing, no problem. If anything unparliamentary, unethical on the part of the speaker, wait, on the part of the minister, you please give it in writing. The speaker will look into it. That's all. I told, see, I request all the members a strict direction from the Honorable Speaker. Wait. Your time is over. Wait, please. We have 40 more speakers. The Prime Minister has to reply today itself. So only 3 minutes to be allotted all the members. This is the time constraint. So please cooperate with the chair so that we can conclude the discussion and maximum members will be getting an opportunity to take part in the discussion. Please conclude, ma'am, with the last sentence. Last sentence. Sir. Wait, after this speech. मणिपुर घटना रे सर आदरणीय प्रधानमंत्री अत्यंत दुख प्रकाश करी दोषी विरुद्ध रे सर कठोर कार्यानुष्ठान पे निर्देश देइछंती एवं शांति श्रृंखला बजाय रखिया पई श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान मध्ये पदक्षेप ग्रहण करिसंती सर सभापति महोदय एभली एक संवेदनशील दुखद घटना पर अधिक आलोचना न करी गठनमूलक आलोचना एवं पर्यालोचना द्वारा उभय केंद्र एवं राज्यर विकास संभव बोली मु आशा करूची सर। धन्यवाद सर। I will. According to 380, if anything objectionable, that has to be raised at the point of time when it is making. Even you are having a chance, anything unparliamentary, unethical on the part of the speech of the minister, please give it in writing. It will be looked into by the speaker. Sir, give me an opportunity to at least express you. Tell me. Just. Sir, Madam Finance Minister, during her speech, made a very defamatory statement about an incident which happened in Tamil Nadu Assembly, which is very factually, it is a wrong statement. It is a totally unproven one. Okay. She made a statement of a person about the sari pulling issue relating to that will be looked into. That will be looked into by the speaker. I have to give my version. The speaker was sitting at the time. That will be looked into by the honorable speaker. Azauddin Owaisi, please. You have made your point. Now Azauddin Owaisi, please. शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं जिसको टीआरएस पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया।
सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायीद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, FIR हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर, चौथा पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर DMK के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे, कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी-एस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायीद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबा दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। UCC सर, इस UCC का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर, आई एम कंक्लूडिंग।
8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर, मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है, अंसारियों के कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर, आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को धन्यवाद श्री प्रिंस राज करेगा। शुक्रिया सर। Let us see. Okay, next, Sri Prince Raj, please. Sri Prince Raj. अध्यक्ष महोदय जी, आज Sri Rudy ji, anything objectionable, it will be looked into, please. Prince Raj, please start. No. Anything objectionable, it will be looked into. That's all. No. We have to go through the records now. Prince Raj, you please start. Otherwise, I will call the other nine. सर, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं अपने पार्टी की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूं। सर, कल 2 दिन से सर मैं सभी माननीय सदस्यों को अच्छे तरीके से बहुत गौर से सर सुन रहा हूं। सबों ने अपनी अपनी बातें रखी। सर, हमारे सम्मानित सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जब शुरुआत की, पे आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी ये करती है, कांग्रेस ये करती है, वो ये करती है, लेकिन आज देखिए अपने स्वार्थ के लिए ये सब कोई एक जगह एकत्रित हो गए हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए एकत्रित हुए हैं। सर, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए कि भाई इस अलायंस का मुखिया कौन है? जब आप ये अलायंस 2024 में लेके जा रहे हैं तो भाई आपका मुखिया कौन है? आपका पीएम का दावेदार कौन है? सर, यहां की परिस्थिति मैं बताता हूं, परिस्थिति मैं बताता हूं सर क्या है। सर, यहां की परिस्थिति ये है, एक अनार और 100 बीमार, लेकिन जब वो अनार सब सामने आएगा तो देखिएगा एक एक करके सब बीमार पड़ने लग जाएंगे उस अनार को खाने के लिए। सर, थोड़ा सा और हम पिक्चर अगर क्लियर कर दें। सर, हम बिहार प्रदेश से आते हैं और सर आपके सदन के माध्यम से सर हम बताना चाहेंगे, सर हमारे यहां जंगल राज का राज चल रहा है। सर, जंगल राज पार्ट 2 हमारे बिहार सरकार चला रही है
यहाँ पर जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए थे। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जिनके साथ हम ललन जी का बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात कर रहे हैं सर, आप इधर बात करिए। हाँ सर, जिनके साथ ये गठबंधन में हैं, उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई ये पलटू राम है। उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। प्लीज ये बोलते हैं, लेकिन ये सारा कुछ भूलने के बाद, क्योंकि सत्ता का भोग होना है, उसके गोद में जाके बैठ गए हैं। आप ये बता दीजिए, अरे इतना ही बता दीजिए, चारा घोटाला में जिसकी सजा वो काट रहे थे, बता दीजिए भाई उसका केस किसने किया? पिटिशनर कौन थे? वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी थे, वो पिटिशनर बने थे, उन्होंने जेल में भेजा। आप बोलिए, आज के दिन क्योंकि सत्ता भोगना है, उन्हीं के साथ बैठ के आज सरकार बनाए हुए हैं। क्या बिहार बदहाली की स्थिति पे नहीं है? आप ही लोग मिलकर कहते हैं कि भाई यहां मर्डर हो रहा है, वहां लूट हो रहा है, यहां हत्या हो रही है। क्या बिहार बदहाली की स्थिति पे नहीं है? आप ये जवाब दीजिए। यहां कानून व्यवस्था हो, सरकार देखिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में ठप पड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है सर। लेकिन सर, ये घमंडिया गठबंधन जो है, बिहार प्रदेश में जाकर बैठक करती है। 23 जून को पहली बैठक बिहार प्रदेश में जाकर करती है, और पहली बैठक फेल हो जाती है। लेकिन सर, ये हम पूछना चाहेंगे, जब ये पहली बैठक मणिपुर की इन्होंने जिक्र किया। Yes, time is very limited. Please try. Sir, I just need to put some points. I am the only speaker from my party, sir. Sir, I'll put every single point. सर, ये मणिपुर की बात करते हैं कि मणिपुर में ये हुआ, हम गए, यहाँ गए, वहां गए। हम ये घमंडिया पार्टी से, ये गठबंधन से पूछना चाहेंगे कि जब ये बिहार प्रदेश में इन्होंने जब पहली बैठक 23 जून को की, क्या वो उन जगहों पे गए जहां हिंसक वारदातें हुई? क्या उन गरीबों से जाके मिले? क्या उन परिवार से जाके मिले जिनके साथ दुष्कर्म करके जिनकी हत्या कर दी गई? क्या उनके साथ जाके मिले? सर, हम सूची का थोड़ा 3-4 हम घटनाएं के विवरण यहां करना चाहेंगे। 3 मई प्रिंसराज, सर बस 2 मिनट सर इनका सर कच्चा चिट्ठा खोलना भी बहुत जरूरी है सर। नवंबर 2022 में सर अरवल जिले के चकिया में सर एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म के बाद घर में आग लगा दिया गया, जिसके बाद ये हुआ कि उसकी नाबालिग बच्ची और उस महिला का उसकी माँ की मौत हो गई। क्या उसके घर जाने का प्रयास किया उन्होंने? हम लोग गए सर, हम लोग गए। क्या मुख्यमंत्री जी जाने का उन्होंने प्रयास किया? क्या ललन जी उनके घर जाकर उन्होंने समाप्त कीजिए। सर 3-4 पॉइंट सर। और सर नवंबर 2022 में सर बेगूसराय में छोराई में दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या ये इन्होंने जाने का प्रयास किया? क्या ये घमंडिया गठबंधन, क्या उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया? क्या उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया? 3 मई 2023 में सर हमारे संसदीय क्षेत्र दरभंगा जिला में सर अटहर दक्षिणी पंचायत में बलाट गांव में सर एक दलित युवक, एक रोशन पासवान के नाम के लड़के को सर ईट भट्टा पे काम करता था, उसको मार दिया गया। क्या इन्होंने संज्ञान लेने का काम किया? सर यही सर 26 जुलाई 2023 में सर दरभंगा जिला में बेनीपुर सज्जनपुर गांव में सर नाबालिग दलित के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा मार दिया गया। सर क्या ये घमंडिया पार्टी वहां जाने का इन्होंने प्रयास किया? क्या इन्होंने ये जरूरत भी समझी कि उनसे बात कर ले? और ये बात करते हैं, आज ये सिख सुनाते हैं। सर ये कई सर दिन दहाड़े वैशाली जिला में सर दिन दहाड़े बाजार के बीच में एक छात्रा को मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी वहां जाने की चेष्टा करते हैं? और यहाँ आके ये सिख सुनाते सर। सर ये तो सर प्लीज बिहार का दुर्भाग्य सर। हमारे सम्मानित सदस्य आप कंक्लूड करो, अदरवाइज आई विल कॉल द नेक्स्ट स्पीकर प्लीज। 2 पेज नो सर। सम्मानित सदस्य सर श्री हनुमान बेनीवाल जी। सर ओके सर प्लीज कंक्लूड करो। कंक्लूड सर। सम्मानित सदस्य सर श्रीमती नंदित No, time. It is a direction for the honorable speaker. I have to obey. Sir, I am the only speaker, sir, from my party. Sir, हम एक ही सर. Yes, please. Sir, I'll take 2 minutes, sir. Sir, हम सम्मानित सदस्य श्रीमती नवनीत
नवनीत राणा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बिल्कुल सटीक बात बोली। सर वो तो किसी पार्टी से नहीं है, उन्होंने सही कहा। Yes. नवनीत राणा जी, Prince Raj ji, please conclude, otherwise I have to call उन्होंने back. सही कहा कि ये इस सर उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सर ये जो दुर्भाग्य परिस्थिति जो बन गई है, सर इस दुर्भाग्य परिस्थिति पे सर ये इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करना चाहते हैं ये घमंडिया पार्टी जो है, जो गठबंधन जो है। सर हम आप 2-3 पेज सर छोड़ देते हैं, हम अब कंक्लूड की तरफ हम जाते हैं। सर ये बात करते हैं पीएम की विदेश यात्रा पे कि वो विदेश यात्रा करते हैं, ये करते हैं। अरे तो करना तो पड़ेगा भाई, तो कौन करे? आपने ऐसा व्यवस्था बना दिया, किसी मुल्क के साथ आपने रिश्ता अच्छा नहीं रखा। जब हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे, वहां पे पता ही नहीं चलता था कि भाई भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है। आप समाप्त कीजिए ना, मौन रहते थे। लेकिन आज के जब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, पूरी सभा उनका स्वागत करता है, एक मान सम्मान के साथ स्वागत करता है। आज आपने सदन के अंदर पिछले No. Last sentence. 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. No. Okay, sir. I'll take 2 minutes, sir. No, please. 2 minutes. No. Sir, okay, sir. Sir, ये. Sir, but last, sir. I'll conclude. Hariman Benwal ji. चालू तो करो इसको सर। या चलो। सभापति महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पर जो पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है और इसके अंदर पक्ष विपक्ष के दर्जनों। एक मिनट। लास्ट सेंटेंस। सर लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूंगा। नो, लास्ट सेंटेंस। सर बस सर लास्ट। सर इन्होंने ये कहा कि 9 साल में, ललन जी ने कहा 9 साल में इन्होंने क्या किया। सर हम ये जानना चाहते हैं कि 17 साल की सरकार ने, बिहार सरकार ने 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उन्होंने क्या किया? सर आखिरी में मैं कंक्लूड करता हूं सर। मैं आखिरी में ये घमंडिया गठबंधन के लिए एक अपने, सर ये तो विदेशों के कवि का नाम लेते हैं, हम अपने राष्ट्र कवि का नाम लेते हैं सर, उनकी बात करके खत्म करते हैं। सर हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की हम कविता रखना चाहते हैं, जो घमंडिया गठबंधन पे बिल्कुल सटीक बैठती है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मुख रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदर्य को धीक है, या मुख सत्य हंता कम नहीं अधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। अब जो छल प्रचम को धन्यवाद। बाकी टेबल करा दो। इसमें सर जो भाषण बच गया उसको टेबल कर दो। आप नहीं डायरेक्ट करना। सभापति महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव पर जो पिछले 3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है। 3 मिनट। 3 मिनट तो मैं नहीं बोलूंगा। आप शुरू किए, मेरा 3 मिनट तो आप वैसे ही रख दिया मेरा। जल्दी। जो पिछले 3 दिन से चर्चा चल रही है विश्वास प्रस्ताव पे, इस पक्ष की तरफ से दोनों तरफ से मणिपुर हिंसा को लेके सब जगह से बात की गई। सबने चिंता करी कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई, जिस तरह हथियार थानों से लूट लिए गए, 10,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए, और जिस तरह एक महिला का वीडियो आया निर्वस्त्र करके उसको घुमाया, इससे पूरा देश वर्ल्ड में शर्मसार हुआ। इसकी चिंता पक्ष विपक्ष दोनों ने करी। लेकिन सबसे मेरा सवाल इन लोगों से इतना ही है कि क्या आपका इंटेलिजेंसी का इतना बड़ा फेल्योर है कि मणिपुर में घटना पे घटना घटती जाए, और जो आंकड़े दिए गए वो मात्र आपने बताया कि 100-125 मौतें मणिपुर के अंदर हुई है। आप मणिपुर जो संसदीय दल जाके आया, उन्होंने जहां लोगों से मिले करे, और जो हालात वहां के थे वो ठीक नहीं है, वहां शांति नहीं है। मणिपुर के अंदर शांति कैसे स्थापित हो, हम सबको इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और जिस तरह हमारी बहनों को वह निर्वस्त्र करके घुमाया, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं हो, इस बारे में दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा तो ये होता कि प्रधानमंत्री जी पहले ही दिन आके वक्तव्य दे देते, तो ये 15 दिन जो खराब हुए हमारे लोगों के बोलने के लिए, जिस तरह आप 3-3 मिनट की पाबंदी कर रहे हो। पहले तो आधा घंटे लोग बोले, अब लास्ट में 3 मिनट। तो 3 मिनट में सर नहीं बोल सकते हम लोग। हमारी भी पार्टियां, सब हर आदमी चाहता है। लोग कहते हैं लोकसभा में आप जाओ, सवाल उठाओ, बात उठाओ, कहां से उठाएंगे? ये लोग फिर सेटिंग करके वापस मिलकर अपना भाषण दे लेते हैं और हमारे जैसे लोग बीच में रह जाते हैं। तो समझ महोदय, मणिपुर के साथ साथ मैं राजस्थान के अंदर जो
केवल रुक जाओ यार, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? तो राजस्थान में भी आ जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की घटना पे भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यहाँ लोग बैठे होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का जो इलाका जहाँ से गृह मंत्री है, उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। उस कैंपस के साथ अभी कुछ दिनों पहले, और एक किसान की बेटी को भीलवाड़ा के कोटड़ी में दुष्कर्म करके उसको जिंदा जलाया जाता है। जब तक वो जल नहीं जाती तब तक उसको कोयले की भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। ये राजस्थान की घटना है। समझ में, राजस्थान में 2019 से लेकर 22 के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ गैंगरेप के कुल 7,593 और 14 से लेकर जब आपकी सरकार थी 16 तक राजस्थान में नाबालिग बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा के कुल 7,084 मामले उस समय भी दर्ज हुए थे। हमारा मकसद एक ही है कि ये नारी शक्ति को सम्मान कैसे मिले, ये अपराध कैसे घटे। मैं मांग करूंगा अध्यक्ष जी से कि 2 दिन आगामी जब सत्र हो तो नारी शक्ति के सम्मान में ये जो नारी उत्पीड़न के मामले देश में बढ़ रहे हैं, इनके लिए भी 2 दिन इस हाउस के अंदर चर्चा होनी चाहिए और प्रत्येक सांसद को बोलने का मौका मिलना चाहिए। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के रीवा में 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 23 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई। केंद्र सरकार को महिलाओं के बढ़ते अपराध कांड को समझते हुए कड़े कानून बनाने के साथ साथ उन अपराधियों में भय और खौफ पैदा करने की आवश्यकता है। सब देश और राजस्थान में दंगों की जानकारी, ये लंबा चौड़ा आंकड़ा है। 16 से 20 तक दंगे, 16 जो दंगे हुए, उससे पहले दंगे हुए, ये शर्मनाक दंगे हैं जो हजारों की तादाद के थे। 50,000 से ज्यादा आंकड़े दंगों के इस देश के अंदर देखने को मिलते हैं। सब देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और भारत सरकार की बेबसी, ये जब कोई बात आती तो भारत सरकार यहाँ कहती है कि ये तो स्टेट का मामला है, और जब स्टेट अपना अधिकार मांगता है तब आप दिल्ली वाले उनको डरा के भेज देते हो स्टेट को। तो मेरा इसके अंदर रहेगा कि आप अपनी बेबसी नहीं दर्शाएं। आप ये नहीं कहें कि अनुसूची के अंदर ही तो राज्य सरकार जाना है, और जब राज्य सरकार कोई काम करना चाहती है तो आप उसके अंदर अड़ंगा डाल देते हो। तो मेरा आपसे आग्रह है कि छोटी पार्टियों को भी नहीं दबाएं, क्योंकि आप जिस एनडीए के सारे सत्ता के अंदर आए 303 पे पहुंच गए। एनडीए का बहुत बड़ा योगदान था 14 और 19 के अंदर, और अब भी एनडीए के अंदर आप ऐसे दलों को शामिल कर रहे हो जिनका एक भी एमपी नहीं है। वो लंबी मैं नहीं हूं, मैंने आपकी तरफ सुनी है, मैंने आपकी तरफ हूं और मैं इनकी तरफ हूं। मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे दम पे लड़ाई लड़ रहा हूं। सभापति महोदय, नशा आज देश के अंदर जिस तरह नशा बढ़ रहा है, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि देश में करीब 62 लाख बच्चे जिनकी आयु 10 से 17 वर्ष के बीच है, भांग, ओपियोइड व कोकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदय, किसान समर्थन मूल्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए, ये आप उनसे किसानों से पैसा भरवा लेते हो, किसान पैसा भर देता है, लेकिन बीमा कंपनियां वापस मिलती नहीं। न तो उनका कोई ऑफिस है, न उनको हम पकड़ सकते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, नहीं मिलता। राजस्थान में शायद पिछले दिनों में बेनीवाल जी, एक मिनट में इसी बार समय आप समाप्त कीजिए, कंक्लूड करो। मेरी मांग है कि एमएसपी में पूरी खरीद हो, जो फसल बीमा कंपनियां घोटाले करी उनकी जांच हो। 7 अगस्त को मेरे एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जी ने बताया था कि 20 लाख किसानों पर 86,000 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है, और राजस्थान में किसानों पर 1,47,562 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है। कांग्रेस सरकार के भी जब नेता वहां गए थे, जब चुनाव हुए, तब इनके नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। इनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार है और आप रेवड़ियां बांट रहे हो, तो किसान का पूरा कर्जा भी आप माफ करें। राजस्थान के अंदर पेपर लीक की घटना है, ईडी की एंट्री हो गई, हर पेपर आउट हो रहा है, और सीकर के अंदर कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में ईडी ने एंट्री करी है। वहां कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम आ रहा है, जिसमें पहले मीडिया और दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगाया। मेरा ये था कि ईडी की एंट्री से कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हैं, ईडी और सीबीआई को भेजते हैं, और जब आपकी पार्टी ज्वाइन करता है उस केस को खत्म कर देते हैं। मेरा एक निवेदन है, समाप्त करो। एक मिनट साहब, कुछ पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। आप देखो, वातावरण बिगाड़ो मत, आप सुनो, मैं इसी मूड में हूँ आज। आपका एडिशनल समय दिया, अगर नहीं बोल पाया तो फिर वातावरण खराब करो। जल्दी मेरी बात सुनो, एक मिनट में सारी एक डेढ़, आपने इनको 15 मिनट दे दिए साहब, दो नहीं, आप 1-1.5 मिनट में बात, 1 मिनट से कंक्लूड करो। आप भी सिंगल मेंबर पार्टी से, आप कंक्लूड करो प्लीज। जान तो रखो। नो, मोदी सर,
वर्तमान कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2 दर्जन से अधिक बड़ी भर्तियां परीक्षा रद्द हुई राजस्थान के अंदर। ये क्यों हो रही है? पेपर लीक क्यों हो रहा? कानून तो बन गया, ईडी पकड़ती है, एसओजी एसीबी जो स्टेट एजेंट जो पकड़ती है, लेकिन उस मुख्य सूत्रधार को नहीं पकड़ती जिसकी वजह से पेपर आउट हो रहे हैं। आरपीसी के चेयरमैन को बर्खास्त करे। ईडी की जो एंट्री हुई है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ईडी मुख्य उसमें जाए। एक समझ बोले, बजरी का बहुत बड़ा खेल राजस्थान के अंदर हुआ, 4 लाख करोड़ का बजरी का घोटाला हुआ। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी बजरी के खेल के अंदर शामिल है। मेरा यह है कि ईडी बजरी के अंदर भी ईडी की एंट्री हो, बजरी माफिया का इलाज हो। ये हम लगातार एलपी पार्टी आंदोलन कर रही है। ये मैं आपसे मांग करता हूं। एक मिनट सभापति महोदय, एक हमारा था ये बढ़ती महंगाई। सभापति महोदय, 1 मिनट में सारी बात खत्म कर रहा हूं। महंगाई 2014 के अंदर जब सरकार आई, पेट्रोल डीजल 50, 52, 55 रुपए था, आज 100 रुपए चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें कम। बात पॉइंट फाइनल कंक्लूजन लास्ट पेज। ये एक मिनट था। ईआरसीपी अच्छा बोल रहा हूँ साहब, अच्छा भाषण है, लेकिन समय नहीं है इसलिए प्रॉब्लम। ईआरसीपी जो हमारी ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, जिसमें राजस्थान के पूर्व के 12-13 जिले जुड़ेंगे, केंद्र राज्य पर डाल देता है, राज्य केंद्र पर डाल देता है। मेरी मांग है कि केंद्र के अंदर जल संसाधन मंत्री राजस्थान से आते हैं, भाषणों से काम नहीं चलेगा, वोट लेने के वापिस जाना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि इसको केंद्रीय परियोजना दिल्ली की सरकार घोषित करे। चुनाव का समय या एक मिनट साहब समाप्त करता हूं। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आप बैठिए एक मिनट हमारी पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी। उन पहलवान बेटियों का उत्पीड़न हुआ, उनका शोषण हुआ, उन्हें मुकदमा दर्ज कराने के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। कौन सा महिला लोग करते हो? प्लीज बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर, 1 मिनट लास्ट खत्म करता हूँ, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 50 से ज्यादा हमारे समाज के बच्चों ने शहादत दी। आपने जब बात करी, वार्ता करी, तब आपने कहा था कि मुकदमे वापस लेंगे। उन जाट नौजवान जेलों के अंदर बैठे हैं, जाट, पटेल और हमारे मराठे, जो गुजर, जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया, सबके मुकदमे देश की सरकार को। 1 मिनट नो प्लीज, एक कितना आप 10 मिनट लिया ना। मेरी एक मांग ये रहेगी कि सभापति महोदय, हमारे राजस्थान से जो जिनका हमारा खून का रिश्ता है, बिश्नोई जो पंथ बना, वो जाट समाज से 99% लोग बिश्नोई बने। हमें वहाँ आरक्षण है, उनको भी दिल्ली में केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। सिद्ध जो हमारे भाई उनको मिले, काम खानियों को मिले। मेरी ये मांग है कि जो हमारे भरतपुर, धौलपुर के साथ अन्य 8-9 राज्य के जाट है, जो स्टेट में आरक्षण मिलता है, धन्यवाद। नेक्स्ट माओ मैत्रा जी, नो प्लीज मेरी मांग है कि एक लास्ट your mic is off, nothing is going on record. No, your mic is off. आप within 1 minute. No, आप within 1 minute से conclude. Last point पर. Yeah. मैं मांग करता हूं साहब कि अग्निपथ जो आप लेके आए, उसका देश में विरोध और उसके बाद आपने 25% की बजाय कहा कि जो 4 साल के लिए जाएगा उसको 50% में एडजस्ट करेंगे। हम मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना वापस ले, नहीं तो दिक्कत आएगी आप लोगों को 24। और इसमें मेरी मांग है, खत्म तो कर दूं, मैं खत्म तो करूंगा इसको। अग्निपथ के अंदर मेरी मांग है, सेना के अंदर आई रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट का भी जाट रेजिमेंट की तरह गठन किया जाए, ताकि ये नौजवान भी सेना में लड़ने के लिए जा सके। सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। How much? 8 minutes maximum. Thank you, sir. Honorable Chairperson, sir, my esteemed colleagues, India and her people. I stand here today on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to speak in favor of a motion of no confidence brought against an elected government that enjoys a brute majority in what used to be the world's largest democracy. The American novelist Gertrude Stein famously said that if there is no question, there is then no answer. We are here to ask the questions in our Tum Abhi Chup Raho Republic, where the Honorable Prime Minister tells the Governor, Chup Raho, where we as elected MPs in this House are routinely told, Chup Raho. This motion is to break this omerta, this code of silence on Manipur, the most pressing issue of the day,
where we are all supposed to raho chup. And now we are told that it is the BJP's master strategy that even with this motion, the Honorable Prime Minister has not come to the House day before yesterday. He has not come yesterday. He has not yet come today. वो थोड़ी ना बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे. Fine, we are waiting. No problem. I don't know what is more unfortunate, that our Honorable Prime Minister refuses to come to this House, of which he is an elected member, to answer us on Manipur, or that he refuses to go to Manipur to reassure vulnerable, petrified people that peace and reconciliation are his mission. Which is it, sir? This is not just a no confidence in government motion. This is a have confidence in India motion. Most no confidence motions are negative motions, moved with at least a moderate probability of bringing down the government of the day. We know that's not even a possibility. We don't have the numbers. We know that. Many of my friends on the Treasury benches, allies, the BJD, the YSR, have mocked us, saying, you know, you can't bring down the government. It is doomed to fail. But we as India are perhaps the first bloc that has been forced to move a motion not to bring down anything, but to resurrect something, to resurrect India's founding principles of equality and secularism, which this government has buried 6 feet under, to resurrect the right to express ourselves in a democratic framework, which you label as high treason, to resurrect the right of a non-homogeneous, diverse people to exist within a union of state, which your government insists on dividing into us and them. Make no mistake, ladies and gentlemen, this motion is not meant to succeed in this House, but the larger motion, the have confidence in India motion must succeed. Please. Will, when the people of India have their say soon, and it's for this reason I stand before you today. The Manipur issue is mired in silence and in the government's whataboutery and false equivalences. I will point these out as best as I can. The Treasury benches have made vitriolic comments on why only Manipur. What about the instances of rape and murder in Rajasthan, in Chhattisgarh, in West Bengal? We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? I want to tell this House that Manipur is different, and I will tell you why. The issue in Manipur is of a hate crime against a particular community, where it is understood that police personnel of one community, possibly the same community as the Chief Minister, handed over women of another community to be raped and pillaged by a mob, and made every attempt to prevent those women from seeking justice. The issue is that 2 communities today in Manipur have been pitted against each other in an atmosphere of civil war, of ethnic violence that has rarely been seen in India in the past few decades. 6,500 FIRs in 3 months. Which state has seen this? 4,000 houses destroyed in 3 months. Which state has seen this? 60,000 people displaced, 2% of the state's population. Which state outside of wartime or natural calamity has seen this? 150 people dead in 3 months. Which state has seen this? 300 places of worship destroyed. Which state has seen this? An armed standoff between the Manipur State Police and the Assam Rifles captured on video. One controlled by the Ministry of Home Affairs, other controlled by the State Police. Which state has seen this? 5,000 firearms and 6 lakh bullets looted from police stations by mobs. Which state has seen this? Two ethnic groups armed to the teeth, a buffer zone between where hill cannot go to valley and valley cannot go to hill. Which state has seen this? The chief supporter supports one group, accuses the other of being drug runners. In truth, over 15,000 acres of poppy have increased in cultivation in the past 5 years. 250 square kilometers of forest land has reduced under this chief minister's watch. Which state has seen this? Only Manipur, no other state, only Manipur. So stop your whataboutery, stop your false equivalences, address the problem, Honorable Prime Minister. We haven't heard of one change in the police force. We have not heard of one change in the government. We have not heard of one person taking responsibility. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double-engine Sarkar. So let us not insult other states by saying, what about Rajasthan? What about Haryana? What about Chhattisgarh? Manipur is a tacitly approved hate crime. Make no mistake, this is civil war. These are crimes against humanity. The harsh
Reality is, while this government may have built infrastructure, it has destroyed institutions. And I will be doing an injustice to my role in Parliament if I don't call this out. In Manipur, the BJP's majoritarian bravado is destroying a state and tearing apart its people. I don't want to make this about politics. But Honorable Prime Minister, if you're listening, I beg you on behalf of the people of Manipur, change the administration. Allow all parties to work together to mediate a truce. Otherwise, even after your term ends, India will echo in one voice as to what went so terribly wrong in Manipur with such terrible consequences for our country. जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है. India has lost confidence in you. The spectacle of the Prime Minister of the greatest democracy bowing to a religious seers of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. Police manhandling and filing FIRs against champion wrestlers against a BJP MP accused fills us with shame. 50 panchayats in 3 districts of BJP-ruled Haryana issuing letters forbidding Muslim traders entering the state fills us with shame. नफरतों की जंग ने अब देखो क्या-क्या हो गया. सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया. No, madam. You are creating it in every state. Now, we are not, 1 minute, we are not going to be bullied. One crony capitalist is not going to make a monkey out of India's regulators and equity markets while we watch. Mamta Di is not scared. Mr. Stalin is not scared. Akhilesh Ji is not scared. Rahul Gandhi is not scared. A 37% vote share party can only prevail if the rest of us 63% are shared, and we are not. This time we will take you on and we will win. Thank you. I hear the illustrious BJP members of the House. Thank you, ma'am. Well, last para, ma'am. Sir, last para, sir. I hear the BJP members praising their own, and I quote from the Gita, "You have the right to labor only and not to the fruits of labor." Everyone asks, if not Modi ji, then who? This inaction on Manipur, Honorable Prime Minister, where you had absolute power to intervene but did not, is a cornerstone after which India will say anyone but Modi. Thank you very much. Thank you, ma'am. Next, Sri Rahul Shivale. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अरे रहने दो. धन्यवाद. रहने दो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के वजह से आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है. मैंने सबसे पहले मैं विरोधी पक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया, मैं उसका विरोध करता हूँ. और मणिपुर के बारे में पूरे सदन में चर्चा चल रही है. मणिपुर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए अविश्वास ठराव यहाँ पे लाया गया. लेकिन दुर्भाग्य है, मणिपुर में आग लगी है, लेकिन वो आग बुझाने का काम कोई नहीं कर रहा है. विरोधी पक्ष से जो भी वक्तव्य हो रहा है वो आग लगाने का काम का वक्तव्य हो रहा है. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है. लेकिन मैं अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद मानता हूं, अभिनंदन करता हूं. कल उन्होंने जो वक्तव्य किया और मणिपुर के बारे में जो जानकारी सदन को दी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद मानता हूं. और सरकार की तरफ से क्या क्या वहां पे उपाय किए गए, इसकी पूरी उन्होंने जानकारी दी. आज सदन को ये भी मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर में शिवसेना की तरफ से भी वहां पे रिलीफ कैंप लगाए गए, मेडिकल कैंप भी लगाए गए. महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने हमारे वहां के राज्य प्रमुख तोम्बी सिंह, इनके माध्यम से लोगों को राहत कैसे मिलेगी इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं. महाराष्ट्र की तरफ से हम वहां पे पूरी मदद वहां पे भेज रहे हैं. वहां पे रेशनिंग की किट हो, बच्चों के एजुकेशन की साहित्य हो और हेल्थ से रिलेटेड सभी चीजें हम महाराष्ट्र से वहां पे भेज रहे हैं. और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री खुद हमारे शिवसेना के जो राज्य प्रमुख हैं, उनके माध्यम से उसका पूरा ब्यौरा ले रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, वहां की जो हमारी अलायंस है, एनडीए की अलायंस, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार के माध्यम से क्या क्या वहां पे प्रयास किए गए. लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी डिमांड है, वो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं.
to protect and uphold the territorial integrity of the state of Manipur at any cost. Armed Forces AFSPA Act 1950 should be applied uniformly in hill districts. NH2 and other NH should be open as liveliness for the landlocked state at any cost. Adequate force should be deployed to secure movement of essential commodities. Steps should be taken to control price and to curb hoarding and black marketing. The border fencing should be complete along the whole 398 kilometer stretch of Indo-Myanmar border to prevent illegal migrants and militants. Victims due to communal clashes should be compensated of losses of their properties destroyed in the clashes, and also people should be rehabilitated as soon as possible. To implement NRC with base year on 31st December 1961 immediately. Make Manipur State Population Commission functional immediately. Manipur land law may be amended to make it uniform land law in Manipur. Ban on internet may be lifted. The Secretariat and other state government offices may be opened as soon as possible to facilitate people. Peace and normalcy should be restored immediately. ये उनकी डिमांड है, ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने जो नया अलायंस बनाया I.D.I.A, क्योंकि वो इंडिया बोलते हैं लेकिन इंडिया में डॉट किधर नहीं, इनके जो अलायंस है इसमें 4 डॉट है, तो इसमें ही पता चल रहा है कि इसमें कितने छेद है वो दिखाई दे रहा है। और लोगों को, क्योंकि पहले यूपीए नाम था, यूपीए नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसके लिए उसको छुपाने के लिए ये नया नाम इन्होंने लिया है। लेकिन आज भी पूरे विश्व में आप जाओगे तो भारत यानी कि मोदी जी का नाम लिया जाता है। आप विश्व में कहाँ पे भी जाएंगे तो आपको पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे भारत, या वो तो बताएंगे कि मोदी जी का नाम आता है। तो मैं पूरे इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत शब्द में संस्कृत शब्द भ का अर्थ है प्रकाश। भारत शब्द का अर्थ है प्रकाश में मग्न होकर डूब जाना। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही भारतीय संस्कृति है। तमसोमा ज्योतिर्गमय आए, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, ऐसा मंत्र का अर्थ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे, यही भारतीयता है। और उनका विरोध करने के लिए एक एजेंडे के पर एकजुट हुई विपक्ष टूटी हुई एक तांबे पीतल का एक विध्वंसक गठबंधन देश को अंधकार की ओर ले जाने वाला है। इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। भारत शब्द की एक उत्पत्ति भारत नाम के 3 महापुरुषों से हुई है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत की कहानी महाभारत के एक महाकाव्य में आती है। भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत से हमारा परिचय रामायण में मिलता है। भरत का आदर्श भाई का प्रतीक है, जिन्होंने केवल भाईचारे के प्रेम और सिद्धांत के लिए सत्ता का त्याग किया था। भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। हमारे देश के संगीत, नाटक, नृत्य जैसी भी कलाओं की उत्पत्ति इसी विज्ञान से मानी जाती है। ये 3 भरत क्रमशः शिव, सत्य और सुंदर तत्व को प्रेरित करते हैं। यही सिद्धांत मतलब भारत है। मैं उस भारतीयता की रक्षा करने वाले मोदी सरकार के समर्थन में इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं थोड़ा सा है, मैं फ्लोर लीडर हूं, मेरा टाइम है। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई है जन विश्वास से विरुद्ध अविश्वास की, और आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी के आप जानते हैं कि समय की सीमा है, प्लीज आपको समय की सीमा का ध्यान रखिए। मोदी जी और आपको पता है दूसरा भरत नाम है, दूसरा अपना नाम हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का कहना है कि देश को अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। इसलिए वे बड़े गर्व से भारत को हिंदुस्तान कहते थे। हम भी सदैव एक ही शब्द का प्रयोग करते आए। इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों ही शब्द सोच है और एक परंपरा है, चमकदार विरासत है। तो दूसरी इंडिया शब्द में क्या है? यह नाम यूरोप के आक्रमणकारियों का द्वारा दिया गया है, जो नहीं जानते कि भारत क्या है। यह नाम निरर्थक, इसमें पारतंत्र की गंध है। अगर किसी को भी ऐसा ही लगता है तो लगने दो। उनकी और हमारी संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति इसी मिट्टी में है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं भारत के रक्षक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहूं। अध्यक्ष महोदय, शरद जोशी जो किसान संघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि एक है देश के बारे में कहा था, एक है इंडिया और दूसरा है भारत देश में। भारत देश में उत्पादक किसान होते हैं, यह भारत देश है। दूसरा इंडिया किसानों के शोषण के आधार पर जीने वाले मुफ्तखोरों का देश है।
खुद को इंडिया कहने वाले गठबंधन ने मान लिया है कि वह शोषकों का प्रतिनिधि है। हम भारत है, हम किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सभी योजनाओं का जो फायदा हुआ है, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, जो वैक्सीन का भी 140 करोड़ लोगों का फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, नहीं आखिरी में बताना चाहता हूँ, ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस बना है केवल अपने परिवार को बचाने के लिए अलायंस बना हुआ है। क्योंकि जो अलायंस बना है उसमें आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी, उनका बेटा श्री राहुल गांधी, नेशनल कांग्रेस पार्टी श्री शरद पवार जी, उनकी बेटी श्रीमती सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, सबने अपने आप जो बात कहना चाहते हैं तो सबने अपने बेटों को सेटल करने के लिए पार्टी बनाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नेशनल पार्टी रहती है, रीजनल पार्टी रहती है, वैसे ही परिवार पार्टी होनी चाहिए। एंड में मेरा रुका अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, ये अलायंस क्यों बना है उसका कारण बताता हूँ। ये अलायंस बनाया है क्यों? ठीक है, इसका मुख्य कारण एक मिनट, इसका मुख्य कारण है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी। क्योंकि आप नहीं अध्यक्ष महोदय जी के बाद समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये अलायंस बना है ओके नहीं सर, दो मिनट खत्म कर रहा हूँ सर कंक्लूड करो आप, 1 मिनट में बात कर। अध्यक्ष महोदय, ये अलायंस बना है क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी। मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे लेके जाने का संकल्प किया, हिंदुत्व का आगे लेके जाने का संकल्प किया। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पार्टी की नेतृत्व बाला साहब एकनाथ शिंदे साहब को दी। तो ये फॉर्मूला शिवसेना में जो फॉर्मूला हुआ है, वो फॉर्मूला का डर एनसीपी को था, एनसीपी में भी होगा हुआ, और बाकी सब पार्टियां जो परिवार चलाती है उनको भी डर पैदा हुआ कि उनके पार्टी में भी आदरणीय एकनाथ शिंदे जैसा कोई तो होगा और उनकी पार्टी को भी पिछले 3 महीने से मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, अनरेस्ट है। अभी हरियाणा में भी शुरू हो गया सर, और सरकार इसको कंट्रोल कर नहीं पा रही है। अफसोस की बात है कि लगभग 1200 घर तोड़ दिए गए सर अनलॉफुली, और वहां के हाई ओके मणिपुर में हो रहा है, बाकी हिंदुस्तान के भी इलाकों में फैलाने की कोशिश की जा रही है सरकार से। सर मैं प्लीज नो ईवीडन 2 मिनट, ओके। भी उसको ना जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिब फहम वो जका, जिसे ऐश में यादे खुदा ना हो, ईवीडन ऐश में 2 मिनट खुदा ना हो। 2 मिनट 5 मिनट सर। नो 5 मिनट 2 मिनट Sir, first of all, I would like to wholeheartedly support the now confidence motion submitted by our honorable leader and my colleague Sri Gaurav Gogoi ji. Sir, I would like to congratulate the honorable Prime Minister and the UPA government for hitting a century last year. In means of petrol and diesel price hike, they hit a century. Prime Minister and the BJP Sarkar for hitting a century in petrol and diesel price hike. And today is the 100th day they have hit a century, the 100th day of violence in Manipur, sir. Sir, बोल रहा है कि सर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है सर, ये सब हो सकता है सर. Sir, I visited Manipur on the 10th day, that is of 13th May, in Kangopi, Churamchandrapur and Imphal, sir. Sir, there are, yesterday the Honorable Home Minister said that there are medicines, food, everything available, sir. Sir, from yesterday, I understand that Churamchandrapur is totally cut off from
Manipur and there are no food, there are no medicines and no NGOs or people who can provide distress relief is not able to travel in the entire state of Manipur. Sir, 290 tribal villages, 354 tribal churches, 249 Methi churches, 16 Catholic churches, 7,500 houses were burned in Manipur, sir. Sir, this is an institutional attack on the minorities of this country. This is an institutional attack against the Christians of this country, sir. Sir, Modi hai to mumkin hai, sir. Sir, in Kerala, BJP leaders are visiting house to house, meeting the bishops, meeting the Catholic bishops, meeting people and giving cakes on Easter, sir. Sir, on the other hand, they are attacking the churches and Christians in this country, sir. Sir, केरल में ऐसा होता है, सर. सर बोल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सर, किसका साथ है ये सरकार, सर? पीड़ित के साथ है, दलित के साथ है, आदिवासी के साथ है, युवा के साथ है, छात्र के साथ है, किसी के साथ नहीं है, सर. मणिपुर के भी साथ नहीं है. इस सरकार है सिर्फ अदानी और अंबानी के साथ है, सर. सर, एक टैगलाइन है, सर. एक पीआर कंपनी ने आपको एक टैगलाइन दिया है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सर, कुछ का नहीं है, सर. यार, डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे चीजें किरण रिजिजू जी ने बताया था इधर, सर. सर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अमोल कोले, सर, आई कंक्लूडिंग, सर. सबका विकास, सबका विश्वास. सर, डियर प्राइम मिनिस्टर, यूएस